ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਮਜ਼ਾ, ਹੋਣਗੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਹੋਗੀ intensity. Assalamu alaikum and hello to all the cricket lovers, especially Pakistani cricket lovers. Welcome to my channel Let's Talk Cricket. I'm your host Ehtisham. और आज था एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्रिकेट डे ऑफ क्रिकेट फॉर वर्ल्ड कप. और बांग्लादेश खेला, पाकिस्तान खेला, इंडिया खेला अगेंस्ट बांग्लादेश प्लेड अगेंस्ट जिम्बाब्वे, पाकिस्तान प्लेड अगेंस्ट नेदरलैंड एंड इंडिया प्लेड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. तो I often talk just about Pakistan cricket on this, but I think आज जो दिन गुजरा है उसके हिसाब से जो टूर्नामेंट में इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट बढ़ने लगा लोगों का, और जो नेक्स्ट गेम्स में मज़ा आने वाला है. I want to talk about the whole tournament, whole day of cricket today. So without a further ado, let's talk about World Cup T20. So दिन शुरू हुआ था बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे के साथ, जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टर्म्स पे ख़त्म हुआ इन माय ओपिनियन के. अगर आप बांग्लादेश वो हैड वन दैट गेम, but then there was a reviewing for stumping, not reviewing for whether the keeper grabbed the ball from in front of the stumps, but the umpire decided to review that as well. Both teams usually have to stay on the ground when there's this, there is a review going on, even if it's the last ball. और for some reason the umpires ने उनको field से off जाने दिया, ठीक है. Then the third umpire comes back and calls it a no ball. First of all, जब दोनों टीमें जा चुकी हैं, nobody cares anymore. Why are you doing that? It seemed like बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो था ना, थोड़ी सी कुछ हो रहा था, conspiracy. क्योंकि of course Zimbabwe is the bigger underdog story के, और would give you higher billings because everybody want to see what they do next. But ठीक है, they bring Bangladesh back. Bangladesh has to defend 3 runs. The guy misses the ball and it's over. But again, a ridiculous way to end a good game, because Zimbabwe needed 4 runs on the last ball, and they just stupid. And this is the same thing that Pakistan was complaining about कि यार जब कोहली की बॉल हुई थी तब you were in doubt, same umpire Erasmus, तब आपने क्यों नहीं रिव्यू किया, right? So it's just the level of inconsistency in umpiring has been ridiculous in this World Cup. But then the next game was Pakistan versus Netherlands, and Pakistan took care of business today. I was happy that Pakistan made the changes that were necessary, which was bringing in Fakhar Zaman instead of Haider Ali. He looked good. Using Mohammad Nawaz for a few overs in the middle to try to cover for Shaheen. But again, this is where game awareness comes into play. Like, Shaheen doesn't look like Shaheen right now. Uski average pace you have 130 से 140 के बीच में, which is not who he is. Rhythm run up थोड़ा slow लग रहा है. He looks lethargic in the field. बट बाबर ने उससे फिर भी 4 ओवर कराए हैं. आई थिंक देयर इज़ अ मैंडेट गोइंग ऑन कि इसको जल्दी गेम रिदम में लेके आओ, इसको 4 ओवर करवाओ. आज हारिस राउफ ने 3 ओवर डाले हैं यार, राइट? डजंट मेक सेंस टू मी. व्हाई? Shadab bowled brilliant. I think he's doing really well in this tournament, especially pitches उसको हेल्प कर रही हैं क्योंकि पिच में बाउंस और स्किड है. तो इवन इफ इट डजंट स्पिन, ही इसकी जो गूगली है वो स्किड थ्रू करती है, उसकी जो लेग स्पिनर है वो बाउंस करता है. तो व्हेन यू ट्राई टू गो टू टारगेट हिम, लॉट्स ऑफ मिस हिट्स, बिग बाउंड्रीज, सो देयर इज मोर पोटेंशियल फॉर कैचेस. तो शादाब लुक गुड, बट अगेन मुझे जो शाहीन वाला जो बाबर को या तो मैंडेट किया क्या या वो ये खुद कर रहा है, इट इज़ नॉट हेल्पिंग अस इन एनी वे, राइट? वी डोंट नीड शाहीन बैक राइट अवे. अगर वो 2 अच्छे ओवर करा रहा है जैसे आज उसने पावर प्ले में कराया था, ग्रेट. एक और करवा लो, दैट्स इनफ. दैट्स ऑल वी नीड फ्रॉम हिम. गेट हिम आउट थ्रू द न्यू बॉल इन द पावर प्ले और क्लोज टू विद इन द फर्स्ट 8 ओवर्स. उसके बाद उसको डेप्थ में मत कराओ यार. उसकी बॉडी ठंडी हो चुकी होती है, उसको वापस वार्म अप करना पड़ेगा, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, और ही कैन गेट अनदर इंजरी. प्लीज़ उस बंदे को बचा के रखो. The next good bowler, like everybody bowled well. Naseem was very economical. Mohammad Wasim is looking like a brilliant all-rounder for us coming in the future. उसको अगर properly बनाया जाएगा, उसके Yorkers are amazing. Again, he was on a hat trick today. Didn't happen.
हारिस राव हमारा चीता है, हमेशा से रहा फॉर अ लॉन्ग टाइम. ही bowled well. So overall, the bowling unit did their job. Finally, good to see Nawaz get a few overs after that Indian debacle, but he bowled okay, not bad. He gave the luxury of having to not bowl Haris an extra over, even though I think that should have been applied to Shaheen. But then we get to the batting. Batting mein again, Pakistan is not looking to change this. I don't know why. नज़र आ रहा है कि बाबर इज स्ट्रगलिंग. ही कैंट इवन प्ले दिस शॉट्स ऑन द बैक फुट. उसकी कवर शॉट गैस पे नहीं जा. ही कैन इवन कनेक्ट द बैट हाफ द टाइम. और लेंथ इज बैक ऑफ द लेंथ. बॉल नया बाउंस अच्छा करता है, तो ही स्टिल ओपनिंग. आज उसने एक स्टूपिड रन, लाइक इंटेंशन वाज देयर इन द बैटिंग टुडे. रिजवान केम आउट looking to hit the ball, or we had 11 runs in the first over. And then Babar decides to take a stupid single, which was unnecessary because at that point we had 6-7 runs in that over. और रन आउट हो गया, राइट. वो अपने ऊपर भी प्रेशर डाल रहा है. तो वाई नॉट गो वन डाउन भाई? वाई नॉट? नोबडी इज गोना से कि तू बुरा बैट्समैन हो गया या ये हो गया. बट भाई, इट विल हेल्प यू आउट, इट विल हेल्प योर टीम आउट. इट वुड, जैसे बाबर आउट होता है, रिजवान हैज़ टू गो इनटू अ शेल एंड बैट लॉन्ग. Because nobody else, first of all, nobody else is that consistent just yet that you can rely on them. But Rizwan was off to a really good start, but then he had to take a step back. One thing that will help us is कि Fakar is coming in one down. अगर बाबर चेंज नहीं भी करता, मेरे हिसाब से तो Fakar को ओपन करना चाहिए, but that's a different thing. बाबर Fakar आया, उसने he looked good. I think उसकी टेक्निक थोड़ी सी चेंज की गई है, so he's looking like he has more rhythm in his when he's batting. उसका वो एक छोटा सा शफल बना दिया गया है जिससे ही इज़ गेटिंग क्लोजर टू द बॉल. तो उसके लिए वो कट शॉट और पुल शॉट बेटर हो जाएगी बिकॉज इज प्लेइंग क्लोजर टू हिज बॉडी. एंड स्टेपिंग इन टू द शॉट rather than just जैसे वो हाथों से कतरी खेल रहा था. इवन ऑन द स्पिनर्स ही लुक प्रीटी गुड. आई थिंक ही गेव हिज विकेट अवे ट्राइंग टू क्लियर द बाउंड्री, बट दैट्स ओके. दैट वाज पार्ट ऑफ व्हाट ही नीडेड टू डू. उसके बाद शान played well. Rizwan, Mr. Consistent. I know people उसकी गेम को डाउट कर रहे हैं, but again he proved it today. Without him, Babar hasn't been performing. Without him, there is no stability in this order, and he scores 125. That's not bad. 110, 125 is not bad, especially जब आपके 7 विकेटें गिरी जा रही हैं. So Rizwan did well. He scored 49. बेचारे की 50 रह गई, but good on him. So the only thing I think Pakistan needs to do is, one, figure out what they want to do with Shaheen. Either play him limited, or don't play him at all. And the second thing is Babar needs to take a look at himself and decide if he wants to continue this type of performance based on difficult pitches जहाँ पे swing हो रही है, जहाँ पे bounce हो रहा है, जहाँ पे skidding हो रही है. या भाई you're gonna accept कि यार चलो मेरा bad patch चल रहा है, I need a little bit more of an older ball and come one down. और द थिंग इज़, अगर फकर ओपन जाता है, जल्दी आउट हो जाता है, तो अगेन लाइक आई सेड, बाबर टेक्निकली ओपन ही कर रहा है, तो उसकी विश पूरी हो जाएगी. और पाकिस्तान की फील्डिंग लुक गुड. They look like they were into it today, running around, making sure no twos are happening. They limited the twos a lot. The only thing I saw was like, it seemed like यार ये डाइवे मारने से डर रहे हैं. There's only some guys that are doing it, some guys are not doing it, and that one of them is Babar and one of them is what's his name, Shaheen, even though he did have a dive today. Shaheen ka to understandable hai, wo injured hai, but other guys are not putting their body on the line because I guess maybe injury se dar rahe hain, but that's something that makes a difference. वो डाइव मार के चौका रोकना, वो डाइव मार के कैच पकड़ लेना, जो हाफ चांस है वो बना लेना. And that's how these teams like New Zealand, Australia, England tend to dominate. So that's something that I would like to see Pakistan improve on. Now the last game was India versus South Africa. I think India ने ये game अपने आप को cost किया with drop catches, with Rohit Sharma's captaincy a little bit questionable. कि आपने पहले तो पर्थ की पिच पे एक extra batsman खिला दिया batting first instead of an extra bowler. But again, India usually doesn't need that. And then आपने अश्विन को 18वां ओवर दे दिया in front of David Miller. Yes, I get David Miller is a lefty, but David Miller is very, very good against spin. Very good. He's probably one of the best players other than Riley Russo of spin left-handed in South African batting orders. So
that was a mistake, so India cost himself the game. तो अब क्या हो रहा है, अब पाकिस्तान प्ले, अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि every team is in a tournament. अगर साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से हार जाती है then they have to win their next game, right? अगर बांग्लादेश इंडिया से हार जाती है then they have to win their last game. अगर इंडिया बांग्लादेश से हार जाती है then India has to win their last game. अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से हार जाती है तो पाकिस्तान तो आउट है भाई. लेकिन अगर पाकिस्तान बीट साउथ अफ्रीका then पाकिस्तान has to win their last game. So it is getting very very interesting. यहाँ पे लड़ाइयाँ होंगी, यहाँ पे एक दूसरे की कुतखानी होगी, और it's gonna be fun to watch क्योंकि अब group is open and Netherlands holds the key to a lot of teams. तो अगर एक भी अपसेट हो गया ना, it's gonna open up a lot of can of worms, right? तो मज़ा आने वाला है, क्या होगा देखने को. जितने, क्योंकि इस वक्त इस टेबल में कोई भी टॉप पे नहीं बैठा जो आप कह सकते हैं डेफिनेटली इन है. यस, बांग्लादेश का रन रेट ख़राब है, लेकिन दे हैव अ पोटेंशियल ऑफ मेकिंग इट बेस्ड ऑन पॉइंट्स. यस, साउथ अफ्रीका का रन रेट अच्छा है, लेकिन दे हैव द पोटेंशियल ऑफ नॉट मेकिंग इट बिकॉज ऑफ पॉइंट्स. इंडिया और पाकिस्तान का रन रेट सो क्लोज है कि अगर वो दोनों 6-6 पॉइंट पे आते हैं then it comes down to run rate. And then Zimbabwe and Netherlands, it's very hard for Netherlands out, but Zimbabwe has a outside chance as well to win both of their next 2 games and then make it based on points. And then Netherlands has a chance to upset a lot of teams, both South Africa and I think South Africa, yeah, India to definitely, yeah. So it's going to be fun to watch. So अब आएगा मज़ा, अब आएगा गेम ओपन है. I like how Pakistan played today. I hope they continue to improve and will continue to support them. So that's all I have for you guys for this video. Hope you enjoyed it. Please hit that like and subscribe button, help the channel grow, and I will see you guys after the next game. Allah Hafiz, and see you guys.